विल डिस्कस सम एरियाज और फिर हम लोग दोबारा उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाएंगे. राइट, द टॉपिक इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. राइट, इट्स अ main significant contributor in your past paper questions. ठीक है, gravitational potential and gravitational potential energy both are almost relevant topics. That's why when I will start with gravitational potential, I will try to finish up gravitational potential energy as well. So when we talk about gravitational potential is represented by phi. First, I have given you the introduction of that, and its unit is joule per kg. What is its unit? Joule per kg, and it is defined as the amount of work done. This is not an exam definition. Remember one thing, okay? सही है. It is not exam definition. It is just for your perception that what is this by nature. So that potential is actually work done. That is the amount of work done. But in your exam, you will properly define it for 2 marks, because when I will show you the past papers, you will see that there are 2 marks definition of that. So the amount of work done per unit mass, this is mandatory to mention, that amount of work done per unit mass to bring it from infinity to a point in gravitational field. So these all points are very important, what I have mentioned here. Okay, that amount of work done which is done on a body, or which is performed on a body, I mean that energy of the body is being lost actually, or energy of the body is being released when you are going to bring it from infinity to that point. So I will explain what does it mean by infinity in our syllabus. Infinity का मतलब ये होता है कि the point out of gravitational field. Right, what is infinity? A point out of gravitational field, out of gravitational field. So when the point is not in the gravitational field, there will be no work done on that. That's why we will say that at infinity gravitational potential will be zero. But आगे चलते हैं, then I will come to know about, or you people will come to know about the properties of the gravitational potential. Then you have this equation. Please remember this equation, that it is work done per unit mass. W uh, phi is equals to W divided by M, and that's why its unit is joule per kg. अब इसकी derivation है छोटी सी, very small but important derivation, that if you see that potential is W divided by M, right? And work done का क्या होता है? Work done is actually your mass force into displacement, isn't it? ये देखो, this is work, and work is actually replaced by this formula F into D. So if you see that F is actually, I have just used the color scheme, that this F is basically replaced again. ये देखो, F is GMM divided by R square entirely, and this D and this M are just coming from this part. M is coming from this part, D is coming from this part. ये दोनों यहाँ पे आ गए, ठीक है? So now your equation is GMM divided by R square into D divided by M. So small m will be cancelled out. And here there is one simple assumption which you people will make, that is the distances in the gravity or gravitation, they are written in terms of R. That's why I have just put this D as R. और exam में भी आप यही लिखोगे कि the distance can be written as R, or distance can be written as the rate of R. Okay. Okay, सही. So that we can say कि when you will divide this all, अब आपके पास क्या बन गया? You are left with G capital M and 1 R. So G capital M and 1 R. That's why you have to recall and derive this equation, that gravitational potential is minus Gm divided by R. What is this? Minus Gm divided by R. ये फॉर्मूला याद रहेगा? Yes, सही. Yes, sir. Okay. What was the difference in G? Small g was, I mean, gravitation field strength was Gm divided by R square. Keep that point in your mind. I mean, comparison याद रखना आप लोगों ने. That was Gm divided by R square. ठीक है? अब आपके पास यहाँ पे Gm divided by R हो गया. So important things
for this gravitational potential are, that is, the gravitational potential is zero at infinity. Gravitational potential is zero at infinity because you are not doing any work on your object, right? Object is independent, free है ना. It is very simple. If a horse is in a jungle, I think you are not supposed to do any work, or you are not supposed to use or waste your energy to tame it, because that is independent. So if a mass is out of gravity, you have no need to, or the mass has, I mean that planet has no need to work on it. For example, check करो, ये मैंने diagram draw किया. This is a mass, small mass placed at infinity. So when it is placed at infinity, you are, I mean, not you, this star or planet has nothing to do with that, because that is not in the range. Are you Oh, getting this? That is not yes. in the range of this. So it is not just like human के इसको भी अपनी तरफ खींचे, पुत्र तू भी आजा, तू भी आजा, तू भी आजा. No, Oh, until unless this mass, this small m, ये वाला जो green वाला mass है, if it will not be in the range, this big mass will have no effect on it. It is just like the magnet. मैं आपको magnet की example देता हूँ. This is a magnet, or this is an iron piece. Let's say this is an iron, and you have placed a magnet here, north and south. तो मुझे ये बताइए, if this iron piece is far away, then magnet will have nothing to do with that. अपनी energy waste नहीं करेगा ये, isn't it? But yes. as this iron is brought closer to this point, ऐसे यहाँ पे आएगा तो it would be just, it will rush towards this north pole. Why? Because now iron is in the range of field of this magnet, and magnet will not spare it. I mean, you are going to give the chance to the nature, and nature will not spare it. So in the same way, if you are going to bring this green one, in this point, or at a point where it is under the influence of gravity, so the earth will attract it. For example, this is earth, right? We assume karo it is earth. There is a rock which is coming to the earth. Until unless it will not enter in the gravity of the earth will have no concern to that कि what is happening. देखो space में इतने सारे rocks, इतनी सारी mean meteorites and all that stuff is floating. So अगर हमारा अर्थ हर एक को खींचना शुरू हो जाए unnecessarily, then it would be difficult for earth and us as well. That's why earth will only attract those objects which would come in its gravitational field or in its zone. Okay, is it clear to you? सही है, बिल्कुल सही है. Okay, so that is why at infinity the work done is equal to zero. But due to this reason, I can say that gravitation potential is also zero, because gravitation potential is work done only. So अब आप देखो, आपको ये important चीजें याद रखनी है, and those important things are, why do gravitation potential carries negative sign? I can show you the question in which it is mandatory to explain for 2 marks or 3 marks, that why it is carrying negative sign. For that purpose, I have given you 3-4 points, and you have to keep all these points in your mind. और ये सारे पॉइंट्स आपने लिखने हैं फॉर योर एग्जाम. फर्स्ट ऑफ ऑल, that work is done due to attractive forces, so it is negative. This is the game what we have started from F is equals to minus G m m divided by r square, because that is the attractive force. So when attractive forces are doing some work, that will be taken as negative. ठीक है, ये बात क्लियर है? सही है. Secondly, yes, any question? नहीं नहीं सर, सही है. Okay. Secondly, the object comes closer to the surface, it loses its energy. Definitely, as they go, when an object comes closer, it loses its gravitational potential energy, and that's why it takes negative sign. These are two logical reasons, not numerical reasons. अब numerical reason पे बात कर लेते हैं. Here is a numerical reason, that is at infinity potential is zero. Okay, at infinity potential is zero. As the object is brought closer to the surface, it decreases, right? And any value smaller than zero is taken as negative. Numerical reason. Number line theory, right? Number line theory is that one, that if something is zero here, it is something is zero here, यहाँ पे आपके पास ये zero है, and you are going to make the values less than zero.
ये देखो कितना हो जाएगा, -10, -20, -30, -40 एंड सो ऑन. So when the values are decreasing from zero, they would be negative. सही है। ठीक है. लेकिन सर अगर So you वर्क have डन to, इंफिनिटी में अगर जीरो है तो उसका मतलब एनर्जी कोई नहीं है इंफिनिटी में। नहीं आपका आपका जो बॉडी है ना, जो मैस है जो इन्फिनिटी पे पड़ा हुआ है ये वाला, यस। it does not have any energy ड्यू टू दिस प्लेनेट. देखो बाकियों की वजह से हो सकती है, लेकिन जिस प्लेनेट की वजह से हम कैलकुलेट करें उसकी वजह से नहीं होगी ना. ओके, सही है सही है। ठीक है ना. बाकियों की वजह से तो होगी, तो डेफिनेटली तभी वो कहीं से मूव करता करता उड़ता उड़ता पहुंचा हम तक. बट दैट इज नॉट ड्यू टू दिस प्लेनेट. दैट इज वाई. सही है। ये बात क्लियर हो गई. इसलिए आपने ये वेरिएशन देनी है. एंड देन वी हैव द ग्रेविटेशन पोटेंशियल हेयर. इसका ग्राफ देखो. ग्राफ विल ऑलवेज बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. ये बात भी पक्की याद रखनी है आप लोगों ने. नेवर फॉरगेट दिस ट्रिक दैट इट विल ऑलवेज बी इन फोर्थ क्वाड्रेंट. फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब ये है कि यू आर mean it is very obvious to all that it will have uh, negative values. So 0, -10, -20, -30, -40 and so on. So the highest value is, I mean sorry, smallest value is highest नहीं, smallest value, because negative number जितना बड़ा होगा उतना उसका magnitude छोटा होता जाता है. -40 is less than -20, that is less than -10 and so on. So as you move away, ये देखो, body is traveling from r to 2r to 3r to 4r to 5r and 6r and infinity. So gravitation potential is decreasing, decreasing, decreasing at the graph, but actually it is increasing to zero. Remember one thing. So आपने simply ये रखना है, it never touches the axis. आपके सिलेबस में, क्योंकि हम infinity नहीं देते आपको, आपको कोई वैल्यू दे देते हैं, so it will never touch the axis. So phi is smallest at the surface. Smallest value कहाँ पे होगी? Surface पे होगी. And what will be the highest value of the potential? Zero. The highest value of Zero. the potential is zero. Zero, sir, because all the other ones are negative. Yes. Is it clear? All values are negative, so its value will be, highest value will be at infinity, and that will be zero. ठीक है. Same goes to gravitational potential energy. Just इसको भी मैं wind up कर देता हूँ, because that is the same topic almost. So here we go, the gravitational potential energy. Gravitational potential energy is basically simply work done, not work done on work done per unit mass. ये बात याद रखनी है. It is simply the amount, only work done for any amount of mass. Remember one thing. That's why gravitational potential energy at any point is the work done at a test mass, not a unit mass, not a unit mass. Remember one thing. It is not a unit mass, not unit mass. That's why be careful about that, to bring सर ये it दोबारा समझाएंगे यूनिट to मास और that टेस्ट मास point का from डिफरेंस। infinite. टेस्ट मैच का मतलब होता है मैं भी खड़ा हो सकता हूँ वहां पे, आप भी हो सकते हो, कोई माउंट एवरेस्ट भी हो सकता है, जो भी आपका मैच है जिसके ऊपर आप एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हो. लेकिन यूनिट मैच का मैच हमेशा 1 kg होता है. ओह सही, ठीक है, ये नहीं समझा, ये बात सही। याद रहेगी. यस। यूनिट मैच कैन बी, यूनिट मास 1 kg होता है और टेस्ट मास कोई भी हो सकता है। टेस्ट मैच कोई भी हो सकता है जिसको बेसिकली हम लोग अंडर ऑब्जर्वेशन है जो. ओके. सही है। सो वी कैन से दैट if it is work done, so simply, हाँ आप लोग इतने पहले इसका ना फॉर्मूला याद रखना है. GPE is equals to minus GMM divided by R. यहाँ पे एक छोटा सा m एडिशनल लगाया हुआ मैंने, because this is that mass upon which you are doing some work. ये वाला mass है, तो ये mass additionally आ जाएगा साथ में. So when we talk about this, your gravitational potential energy is minus GMM divided by R. पोटेंशियल में फर्क था. What was potential? Potential was ये potential था आपका. Gm divided by R was the potential. But when you just multiply this number with small m, so it becomes gravitational potential energy. ये चेक करो. Right? GPE, these are two stars मैंने इसलिए बनाए हैं. GPE is equals to mass into gravitational potential. Mass into gravitational potential. So when you place mass outside and gravitational potential की वैल्यू, ये देखो gravitational potential है minus gm divided by r, and just rearrange this all, तो आपके पास क्या हो जाएगा, you will get minus g
हाँ, from here there is one point, ये check करो, you can go to this side, ये देखो, isn't it simple one, माइनस जी एम और स्मॉल एम यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया और आर आ गया, इट इज वन यस, डेरिवेशन. सेकंड सही है. डेरिवेशन इज एम जी एच, ये सेकंड डेरिवेशन मैंने यहाँ पे की हुई है, एम जी एच है. These are two derivations coming from gravitational potential energy, and you people now that we are familiar with gravitational potential energy is mgh. ठीक है ना? यस, यस, अभी तो सही. हम लोग ये फार्मूला पढ़ रहे हैं ना, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, बट एक्चुअली वी आर फेमिलियर विद एमजीएच. सो एमजीएच कैसे आएगा? जस्ट कंसीडर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम इनटू जी एम डिवाइडेड बाय आर. अब ये जो जी एम डिवाइडेड बाय आर है, इसको आप यहां से देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ग्रेविटेशन, का है. यस, ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया मैंने. ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ इज जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर. तो यहाँ से एक आर को उठा के मैंने यहाँ सामने मल्टीप्लाई कर दिया. सो आई गॉट जी आर इज इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय आर. तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस जी एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू नाउ जी आर. ये बात समझ आई? सही, सही है. ठीक है. सो अगेन एज आई टोल्ड यू दैट आर ऑल्स आर जस्ट इंटरचेंजेबल. So because we are considering that body is traveling heights, तो इसलिए मैंने r को किस में शिफ्ट कर दिया, r is written in the form of h, so then this formula will be written as mgh. That's it. सही है. ठीक है. तो ये आप लोगों ने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी के लिए देखना है. मोस्टली यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट फ्रॉम फाई. ग्रेविटेशन पोटेंशियल से ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की तरफ आपको लेके जाता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन. ये बात लाजमी मेंशन कर रहा हूं मैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होता है कि इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके पास फाई की वैल्यू, फाई का ग्राफ दे देता है वो. ठीक है. एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट जीपीईज एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक है. सही है, सही है. ओके. सो व्हाट वी विल डू देन, आपके पास अगर ये ग्राफ दे दिया मैंने फाई का, ठीक है, so you will be having some mass. For example, you are calculating gravitation potential at point A. ठीक है. So gravitation potential at point A is minus 40 into 10 की power 8. This is prefix which you have to use. And if you want to find gravitation potential energy at point A, बस आप mass के साथ multiply कर लीजिए इसको. सही. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैथ मैंने दिया हुआ है यहाँ पे 180. सो इफ मैथ इज 180 into here gravitation potential is almost 9 point something, तो माइनस 9 into 10 की पावर 8 कर दिया मैंने. तो ये आपके पास ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट पॉइंट बी. इन द सेम वे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एट पॉइंट ए. वो कैसे हो जाएगी? 180 into 40 into 10 की पावर माइनस 8 with negative sign. So I am going to take this negative sign out. So that would be 847.2 into 10 raised power minus 11, sorry, plus 11. ठीक है, joules. That is the energy at point A. तो आप लोगों के पास, if you want to find out the change in gravitation potential energy, simply use this situation. ग्राफ गिवन होगा अगर, तो आपने ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैसे कैलकुलेट करना. चेंज, आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज. रिमेंबर वन थिंग, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चेंज फाइंड करना आपने फ्रॉम द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल. तो चेंज इज mass into change in potential. Actually, delta GPE is m into delta phi. You are having change in potential ना, तो change in potential को calculate किया and you just multiplied with mass and you got this number. That is 5.4 into 10 raised power minus 4. If you have positive sign, इसका मतलब ये होगा कि gravitation potential energy is increasing. And if you have मतलब negative इन्फिनिटी की sign, तरफ जा रही है. yes, and if you have अच्छा. negative sign, तो इसका मतलब GPE is decreasing. ठीक है जी. इज दिस क्लियर टू सही है. ऑल? उसके बाद आपके पास फॉर्मूले से ग्राफ नहीं गिवन हो अगर, चेक दिस वन आउट. दिस इज इन दिस these notes I have put everything which is basically asked in your paper. अगर फॉर्मूला नहीं गिवन, सॉरी ग्राफ नहीं गिवन, and you are having formulas here, there are 2 points and on those 2 points gravitation potential energy is GPE at point B is this and GPE at point B A is this. There are 2 gravitational potential energies like this. So you will subtract them. Subtraction के लिए with sign subtraction करनी पड़ेगी आपको.
माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर एट बी, माइनस ये फॉर्मूले का, एंड दैट विल बी माइनस ये साइन जी एम एम डिवाइडेड बाई आर एट ए, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज जस्ट सेपरेटेड ड्यू टू ए, एंड बी के लिए आपके पास बी से कैलकुलेट करेंगे. जस्ट टेक जी एम एम कॉमन एंड इट वुड बी 1/RB minus minus plus 1/RA. So finally the value you have is GMM divided by 1/RA minus 1/RB. ये वाला फॉर्मूला भी आपने रिकॉल करना है, प्लीज रिकॉल इट फॉर योर कन्वीनियंस. अगर आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जस्ट प्लग इन द वैल्यूज एंड एंजॉय द आंसर. एंड अगर आप थोड़ा सा और इसमें आई मीन ब्यूटी लाना चाहते हो, तो जस्ट टेक एलसीएम ऑफ दैट. एलसीएम लोगे तो यू विल गेट दिस इक्वेशन, दैट इज R1 R2 minus R1 divided by R1 into R2, सही या समझाएंगे, R2 into भूल R. गया एलसीएम का क्या है। जी, ये एलसीएम क्या होता है मैं भूल गया। मैथ्स। एलसीएम मतलब आपके पास प्रोडक्ट लिया तो इट विल बी आर ए इंटू आर बी इन द बॉटम, और ऊपर आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करवा दिया तो आर ए कट जाएगा एंड यू विल बी ओके लेफ्ट विद आर बी हियर, एंड अच्छा अच्छा यहाँ पे अच्छा फिर कट जाएगा ओके सही तो इट वुड बी विद आर ए. ठीक है. सही सही सही। So this is all about your gravitational potential energy. So I tried my best to pace up as much as possible ताकि आप लोगों का ये एक बड़ा मेजर टॉपिक था. There were I today we covered three topics: gravitation potential, gravitation field strength, gravitation potential, and gravitation potential energy. So I hope that it would be clear to you. मैं आप लोगों को वर्कशीट भेजूंगा and you will try these questions. Question number 1 is related to this topic, so I believe that it would help you out to calculate the questions. Okay जी. अच्छा सर ये जो आपने इसमें जो ये वाले नोट्स भेज देंगे, इसमें आपने थोड़ी वो कस्टमाइजेशन हाँ, की ये हुई है जो ना, वो मैंने थोड़ा भेज एनोटेट देंगे। किए, यस बिल्कुल भेज दूंगा. जी ठीक है. बस ये था। ठीक है सर। ठीक हो गया. ओके जी. एनी ओके सर, क्वेश्चन? अल्लाह। नो सर।